Hello everyone, this is our task session. You can take it as a challenge. So I give you a challenge here. How many of you can do it if you really join my day 1, day 2 and day 3? So you will be able to really translate all these sentences. Okay, so let me know whether you can do it or not. You should be able to translate all these if you really join my day 1, day 2 and day 3 because I covered all the part in 3 days. Okay. So this is our first sentence. मैं उससे कभी बात नहीं करना चाहूँगी. मैं उससे कभी बात नहीं करना चाहूँगी. Try to translate and speak and have your practice and add your expressions as well. Otherwise, it will sound like you have crammed it. So add your expressions. मैं उसे कभी नहीं चाहूँगी कि मैं उससे कभी बात नहीं करना चाहूँगी. मैं उससे कभी बात नहीं करना चाहूँगी. Try to speak like this. Our next sentence. मैं उस बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहूँगी. मैं उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहूँगी. Try to translate. Next sentence. मैं कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूँगी. मैं कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूँगी. Try to translate. Take a pause and translate and have your practice with it. Next. क्या तुम चाहोगे कि मैं उससे बात करूँ? क्या तुम चाहोगे मैं उससे बात करूँ? Try to translate. Add your expressions and have your practice. Being alone. क्या तुम नहीं चाहोगे कि मैं इस कंपनी में जॉब करूं? Speak loud out. And next sentence. मैं चाहूँगी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो. मैं चाहूँगी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो. Try to translate. Next sentence. मैं चाहूँगी कि तुम कभी भी कोई लीगल काम ना करो. मैं चाहूँगी कि तुम कभी भी कोई लीगल काम ना करो. Try to translate. Take a pause. Pause this video and try to translate. Speak by yourself. Then go to next. Okay. Next sentence. क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं तरक्की करूं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं तरक्की करूं? How to say तरक्की? Just think about it. I hope you can do it. It is a very simple word. I hope it is coming in your mind. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं चाहूँगी कि आप ये बात किसी को ना बताएं. मैं चाहूँगी कि आप ये बात किसी को ना बताएं. Try to translate. Speak by yourself. Even if you speak incorrect, you will really have your practice and I will let you know the right answer. Okay. मैं चाहूँगी कि तुम उसे बोलो कि वो मुझे कॉल ना करे. मैं चाहूँगी कि तुम उसे बोलो वो मुझे कॉल ना करे. Speak like this in English. Okay, have your practice. नेक्स्ट. क्या आप चाहोगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करूं? क्या आप चाहोगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करूं? स्पीक लाइक दिस. Try to translate and have your practice. Add your expression in third part. Your first aim is to try to translate. And then second, you have your practice. Be comfortable. And in third part, you have to add your expression. Make it sound like as you are speaking by yourself. It shouldn't be crammed. It shouldn't be sound like you have crammed. ओके. नेक्स्ट वन. मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम मुझसे सॉरी बोलने को कहो. मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम उसे बोलो कि वो मुझसे सॉरी बोले. ऑल्सो यू कैन से लाइक दिस. ओके. नेक्स्ट वन. मैं चाहूँगी कि तुम एक दिन उसे मज़ा चखाओ. हाउ टू से मज़ा चखाना. टेक हिम टू टास्क. टेक हिम टू टास्क मीन्स मज़ा चखाना. ऑल्सो यू से इन हिंदी सबक सिखाना. ट्राई टू ट्रांसलेट दिस. Add your expression again, I would say. Without adding expression, it will sound like you have crammed it. Okay. Next one. मैं नहीं चाहूँगी कि आप उसके आगे घुटने टेको. घुटने टेको means you surrender. You are talking about surrender. So, kneel before someone, it means you surrender. Kneel before someone. Try to translate, add this vocab and try to speak by yourself. Let me know whether you can do it or not. नेक्स्ट वन. क्या आप चाहोगे कि मैं उसे बेवजह डांटूं. बेवजह फॉर नो रीज़न. ही इज स्कॉल्डेड मी फॉर नो रीज़न. आई यूज्ड हियर. ट्राई टू यूज इन योर सेंटेंस फॉर नो रीज़न. नेक्स्ट. क्या आप नहीं चाहोगे कि मैं कंपटीशन में पार्ट लूँ. हाउ टू यूज इट. टेक पार्ट इन कंपटीशन. Yeah, I know it is okay. This is a very simple and common way to say. But also you can use participate, which word you already have in your mind. Normally we use it, participate. And then second and the last one option is compete. This is new and I know few of you just must be knowing it beforehand. Compete.
सो ट्राई टू ऐड न्यू वर्ड इन योर सेंटेंस. क्या आप नहीं चाहोगे कि मैं कंपटीशन में पार्ट लूँ? ट्राई टू ट्रांसलेट. ओके, नेक्स्ट वन. क्या आप नहीं चाहोगे कि मैं और लर्निंग वीडियोस अपलोड करूं? एक्चुअली दिस इज सेंटेंस फ्रॉम माय साइड, सो आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इट. वुडंट यू लाइक मी टू अपलोड मोर लर्निंग वीडियोस? यू हैव टू स्पीक लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. मैं नहीं चाहूँगी कि आप मेरे सिवा किसी और चैनल को सब्सक्राइब करें. ट्राई टू ट्रांसलेट दिस. हाँ, नेक्स्ट वन. मैं चाहूँगी कि आप उसे बोलो कि वो टाइम पर आ जाए. मैं चाहूँगी कि आप उसे बोलो कि वो टाइम पे आ जाए. सो दिस वॉज अवर लास्ट सेंटेंस. ट्राई टू डू इट, एड योर एक्सप्रेशन, हैव योर प्रैक्टिस एंड बी कंफर्टेबल. Thank you. So let's link up later with new session. Thank you.